मणिपुर का जो पाइनएप्पल है वो बहुत अच्छा माना जाता है। हम लोग उखरुल जा रहे हैं और ये हमारा पहला स्टॉप है थोचल। हाँ, तो वी आर एट द एंड ऑफ द वैली का जब एंड पे है वहीं पर है। इट्स अ प्लेस कॉल्ड यागन पोपी। इट्स अ गुड प्लेस टू स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट क्योंकि हम लोग जल्दी निकलते हैं। और जनरली आप देखा है ना कि इम्फाल मणिपुर वगैरह पे ब्रेकफास्ट जनरली बहुत लाइट या नॉन एग्जिस्टेंट है, लेकिन अब ऐसे जॉइंट्स मिलते हैं जो हम लोग होटल बोलते हैं, तो उसी में यू आर गोइंग टू गेट लार्जली दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब थोड़ा पूरी मिलेंगे, हलवा मिलेंगे कुछ जगह पे, तो लार्जली रिस्ट्रिक्टेड और दिस आजकल पराठा चालू हो गए। सो दिस इज लिटिल डिफरेंट पराठा। ये भी आलू पराठा है लेकिन इसमें फ्राई किए गए हैं, डीप फ्राइड है, काइंड ऑफ डीप फ्राई। या इट्स ओनली ऑयली बट दिस इज व्हाट। सो अगर आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट ढूंढ रहे हैं तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच, यही होने वाला है। स्वादिष्ट तो रहता है, हेल्दी और नॉट वो तो अलग क्वेश्चन है। चलो अच्छा है, क्रंची है। बट आई फाउंड दिस ये फ्राइड ये मैं यहीं पर ही देखा हूँ। ऐसा नहीं है जैसे दिल्ली के आप पराठे वाली गली में भी जाएंगे, वहाँ पराठा डीप फ्राई कर देते हैं ऐसे। हाँ, मे बी दे गॉट इट फ्रॉम देयर, बट हियर मे बी दूसरी जगह भी हो सकता है। माय एक्सपीरियंस में यहीं पर ही मैं देखा हूँ। मतलब फूड ट्रिप्स का यही मज़ा है, आप जगह जगह रुक के जो नेचुरल ब्यूटी है उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, साथ साथ जो लोकल फूड कल्चर है उसका भी अनुभव लेते हैं। Yes, that's what we like to do. तो अभी हम लोग द इम्फाल वैली अभी ख़त्म हुए हैं, सो वी स्टार्टेड क्लाइंबिंग दी आवर अप्रोच टुवर्ड्स उखरुल। And right now this is like a very famous in the sense like a milestone here, क्योंकि यहाँ से वैली दिखाई देते हैं if you see from there. So this place is called Mahadev. और I am not very sure if this was the original name of the place, लेकिन सब लोग महादेव बोलते हैं, लोकल भी महादेव बोलते हैं. So this is called Mahadev here. Anyway यहाँ पे ये मार्केट होता है क्योंकि आसपास काफ़ी विलेजेस होते हैं, तो उन लोगों के प्रोड्यूसर्स यहीं पे आते हैं. पहले ये एक्चुअली मार्केट यूज्ड टू बी देयर, लेकिन अभी ये रास्ता नया बने हैं तो वहाँ के मार्केट तोड़ के यहाँ पे भी बने हुए हैं. अभी यहाँ पे रोड ब्रॉडनिंग चल रहा है. या तो आई थिंक 4 लेनिंग 2 लेनिंग ऐसा कुछ तो हो रहा है. नॉर्मली द रोड टू उखरुल बहुत गंदा है, बट इट्स बीन हैपनिंग, अच्छा काम हो रहा है. सो दिस इज़ अ न्यूअर थिंग. और मणिपुर का जो पाइनएप्पल है वो बहुत अच्छा माना जाता है. या सो पाइनएप्पल, या आई थिंक पाइनएप्पल इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू गेट इन मणिपुर. लेकिन अभी क्या है कि पाइनएप्पल का सीजन जून जुलाई में है. Okay, so and right now we are at the opposite side of June July, right? अभी तो जनवरी वगैरह है. तो but I think we probably are the only one who produces such large size pineapple even in the winter days. जो पहले हम when I used to come ऐसा winter में कभी नहीं मिलते थे, but today when we go to the pineapple fields and farms, you will find कि लोग लगे हुए हैं. Thayong is a place in the eastern end of the valley. Okay, so Thayong is like the first. I'm not sure if they're the first one, but they were like almost the very pioneer group, you know, who started planting pineapples in large quantity. तो पहले हम लोग जो बोलते थे when we say ऐसे बचपन में ऐसे कहानी पे कि सबसे अच्छा पाइनएप्पल कहाँ रहेंगे तो थयोंग का बोलता है. ठीक है. So this is one of it. So very likely only difference is इसका जो पाइनएप्पल है right now, because it's not in the season, it may not be as sweet as how it's supposed to be, but it will still be better than probably what you get in those big supermarket. That I guarantee you, it's going to be better than that. So let's try some. Yeah. It's like a popsicle. Yeah. Pineapple popsicle. Yeah. Try this. Huh? Not bad.
Not bad. बहुत अच्छा है. But this is off season pineapple. Imagine on season में कैसा रहेगा. No? Sweet, juicy, सब मसाला. Salt and a little bit of chili. Morocco. Yeah, Morocco. See, you got to think Morocco. Morocco means chili here. It won't be spicy. Oh. What is that? Look, I know. Oh, this is a chahauk tan. I don't know. It's like a pancake, more like a pancake out of that sticky rice, black sticky rice, chahauk ka. So you have this. It's wrapped like this, no? And garam garam hai, dekho. If you touch it. तो ये घर पे बना के लाते हैं घर से. Give me this hard put up, yes. Try this. Let's try it. So this is actually. So this is the roti. Obviously, ऐसा नहीं बनाते हैं. But this is how steamed is. What do they add? Like rice and? This is just the Sugar and rice. Just sugar and the rice. Try this. Try. See, chahauk नहीं कुछ है कोई सा. हाँ, so this is sticky rice only, but sticky rice ऐसा आपने black color में भी दिखाया होगा. Then you have the white. Chahauk angogwa means white here. So this is the white type, and as you can see, it's very sticky. Okay, it's like very very starchy. And yeah, let's try and have it. After pineapple, it tastes bland. Yeah. So this is called ngamu. Okay. So this is a very popular and actually quite an expensive fish here. And this is very very popular for iromba, ametpa and spicy chutney जो होता है ना. So when you have the ngari के जो जिन्ना भी जो dishes है, उसी में you have to grind, but not exactly like a grinding, but you basically smash them, you know, and you put them in whatever dish that we cook. It's going to have a very very interesting taste. It's going to add a very nice strong flavor. You have this. इसका जो पीछे नीचे देखेगा ना, it has a little, I don't know, it has this what do you call it, whatever the fins नहीं, but इसका जो color है ना नीचे, देखो ये पूरा ऊपर black है, dark है, और इसका नीचे जो है ना, it has this, I don't know, snake like kind of thing, you know. So there's one whole series of fish of this type of look, okay, which are very expensive and which are very priced. But this is a ngamu, which is like I said, a very 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 important thing. Imphal के घरों में you have pond. तो हमारा जब शादी वादी होता है ना, so you normally इसको एक fish ना वो pond पे इसको चढ़ा देता है. The idea is कि there are multiple explanations to it, but one of the nice reason what I feel is कि ऐसा हो कि see this fish we also okay ये तो okay is popular for our ametpa iromba and everything, but it's also जब कोई बीमार होता है, जब आप कुछ नहीं खा पाते, तो normally dry fish and rice is one a very simple and wholesome, very nutritious kind of combination that we consider and we have it. So we put this in the pond so that कि जब in that family if there is ever ऐसा कुछ बीमार हुए या कोई बच्चा पैदा हुए, at that point in time the woman needs to get strength quickly, right? So it is considered कि हम लोग ऐसा चढ़ा देते when you get married so that it gives birth to more of such kind of fishes, और अपने prosperity अपने तालाब में we have more of this, because our तालाब is for traditionally अपना जो तालाब है is also for water and also for fish. ये dried and smoked दोनों है. See, there are two types. It doesn't have to necessarily smoke. You can smoke it, or you can smoke a little bit and you do it a little bit in the sun. So people do that as well. So very likely what would have happened is they would have, when it was a little fresh like this, no, they would have smoked it for, let's say, for some time, but the rest of the actual drying they would have made it happen from there. Come on, I think we should actually take this. Snails. This is a snail. I think this is Ninghabi. Okay, so there are, okay, so you get the snails in various locations, in flowing water, in still water, in pond and things like that. I am not very sure. I may be wrong. If somebody of you viewer knows it, which is the right one, they can comment and tell you. But for now, I'm going to consider this is Ninghabi, because this is not. There's one thing called labuk tharoi, which is there in the fields as well. See, this is again the typical shrimp hai, yahan ka khajing. Okay.
Oh, so they are alive also. You know one thing? You can actually eat this. raw. Hmm. How is it? It's pretty fresh. That's not bad. Was it not, huh? Oh, look at this. Look at this fish. My God. See, this is what you get to see when you come to all these places, huh? It looks like a snake. Look at this fish. See, this is again a very, very rare fish, okay? In a way, I feel bad ki. Oh, sheep eating akis on. See, there's all. Ye to I eat a lot. So this is a little rarer kind of, in fact, very rare kind of fish. I feel bad. It's been fish when it is so small. But that's the. This is ngakra, I think. See, ngakra na to ina. Ngachik. Okay. I think this is from the catfish family. Eh? Anyway, so thank you, Ine Mervis from Thawai village, and we have bought our tharoi. Hopefully, we'll get a cook tomorrow. Ini yam nuai jere ko. Koi yang naman tau jere. Oh, matang nung lake. Oh, oh. Bye bye. No, ming do kari ba? Sorry, kaure. Nganga. Oh, Nganga. Nganga is from which village? So Nganga is from Jalanbung. Jalanbung is a village which just go a little ahead from there. And yes, again, yam nuai jere ko. And when people come, please try to stop in these stalls. They have very good products, producers and fresh ones. Other than it's so good that see they are also eating. अपना produce भी अपना produce खुद खाते हैं, so it's a very good thing. And people are very friendly, as you see, no. Ganga, okay, thank you, Ganga. हम नोआई रखो, मथन से लाके को. ठीक है, नोआई जरे. So right now we are in this, we're like halfway to Ukhrul. Ramva. So this place is called Ramva. This is a popular place where people come here to stop and buy things because और यहाँ का जो आसपास के जितना भी जो गांव है वहाँ से काफ़ी fresh produce आते हैं. So आप जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, it will keep changing over every season, every month, you know, and it keeps changing fast. और यहाँ पे सब local produce है. आप यहाँ पे देख रहे हैं ना ये. So this is the local walnut. यहाँ का जो local walnut है. हाँ. अमरूद है उसमें the only difference is कि अब जो वहाँ सुपरमार्केट वगैरह में मिलता है उसका छिलका काफ़ी सॉफ्ट है and you don't have to take so much of pain to it. इसमें क्या है ना बहुत कम है. ये कहाँ का है? ये लोकल होता है? ये लोकल का ही है. नहीं अंगल तू क्या ऐसा अखरोट देखा नहीं. You know हाँ? We can try one. It won't go like that. Right. See, I'll show you one thing. I'll tell you what to do. Wait. Give. You need to have a pin or something for this. चाहिए मैं तेरे दिले तेरे को जा. इतना मेहनत करेगा है खाने में. And that's a fun, but it's more of a fun. हाँ see. You will take it out like this. Tough रहता है. So this is a little pain in having it. ठीक है मतलब अखरोट है ये. अखरोट तो है. But ये सब snacks है. It's all snacks. So this is that जो आपको पसंद नहीं था. Fish mint है. So this is like a local pancake है. ये किसका बनाते हैं? स्टिकी राइस का? ये स्टिकी राइस का ही है. चाहोगे ना ट्राई? चाहो. या अमरूद है. अच्छा मेरे को ये बताइए ना, ये तो ये और इस वैरायटी में क्या फ़र्क है दोनों में? ब्लैक चाहो. ओह ब्लैक राइस, वाइट राइस. थोड़ा ये खिलाइए ना ब्लैक. ये ब्लैक राइस मतलब खिलाइए. ऑयल डाल के पैन में पकाते हैं. अच्छा. First you have to see it is that very sticky, chewy, oily. सुनेस कम हो गया. खाया क्या आपने? ये अच्छा लग रहा है देखने में. मूंगफली भी है, मूड़ी भी है, तिल भी है. This is and jaggery. Yeah. Huh? So this is like a kabok. So this kind of thing, no? आजकल ये आता है ना क्या है? Protein bars. Energy bar. Protein bars, yeah. No. इसकी जो sticky thing ना, ये चूही से बनता है. चूही is It's not good. No, गुड़ नहीं है. अच्छा. मतलब गुड़ के ग्रुप से है, but I think it's refined. ये जो sugar cane के जो juice ना, after you
make into a when you juice it out and then आप जब boil करते हैं ना तो you get a very I think refined version of the गुड़. I'm not very sure exactly गुड़ कहाँ पे आता है और गुड़ की क्या बात आता है. मतलब ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है. हाँ लिक्विड फॉर्म में होता है. It is a very clear मतलब ब्लैक कलर का. Is it black or red? I'm not sure. But हाँ, मतलब हाँ, कलर का होता है. It's a clear. Okay. ये देखा था अपने ईमा मार्केट में. हाँ. वो गुड़ के साथ बेच रहे थे. जैसे हनी होता है ना. हाँ. वैसे दिखते हैं. But it's not from the from the beehive, but it's from the sugar cane. तो उसमें ये होता है. बहुत अच्छा है. ये कप में क्या है? सीधे के ले क्या? Oh, you should try. इन्हें नमते याद रहे बस इनमें हमसे. So this is bamboo shoot. No, this is like a amit pa, this is like a like a singju kind of thing out of isibo ka haiku of gooseberry here. और gooseberry मतलब आंवला है. Amla, हाँ. Amla is see singyang ni na. And there's ginger in this. हाँ. Very nice. Ginger. Very nice. खट्टा है. और तीखा भी. But it's nice. It wake you up. यहाँ का अदरक का बहुत शार्प टेस्ट है. हाँ. बाकी यहाँ पे फ्रूट्स हैं. एवोकाडो. हुजूर पे एवोकाडो की मतलब लग रहा है. हाँ. So this avocado is towards the end of the season ही हो रहा है. Dragon fruit is also यहाँ का local है लेकिन this is not the season. Dragon fruit is June July ना तो बताओ. So but magi aphawa phang ba June July phang ka na phang. So even this is also local here but this is towards the end and not the best time now. But the fresh ones you'll get it the best sometime around June July के आसपास में मिलेगा. ये जो लड्डू है वो वाला इसमें उसमें क्या फर्क है? ये भी खोई है वो भी खोई है. इसका वो चाहाव से बनाया हुआ है. You can see the black. नोइन जरे. Yeah, वो नोइन जरे. ये जो पूरा स्ट्रेच हमने इम्फाल से उखरुल तक का कवर किया. क्या? एडवेंचरस था. मतलब बम्पी राइड जो कहते हैं ना वो था. और एक बस छोटा सा स्ट्रेच मिला हमें. मुश्किल से लगता है 10 किलोमीटर का जो बिल्कुल सही रोड थी. और बाकी जगह तो बिल्कुल अभी लगता है समय लगेगा. काम चल रहा है. चलिए अब हमें बताइए उखरुल के बारे में. उखरुल के बारे में देखो अभी राइट नाउ वी आर एट द आउटस्कर्ट ऑफ उखरुल. ओके. तो यहाँ से अच्छा व्यू मिलता है. सो हम लोग आते हैं जब हम लोग कोई ऐसे लोगों को लेके आते तो यहाँ पे बैठ जाते थोड़ा जैसे आपको लगा था ना कि रास्ता इतना ख़राब है तो थोड़ा एटलीस्ट ये देख के थोड़ा सुस्त होता है कि ओके उतना रास्ता क्यों सफ़र करना पड़ा हमें ऐसा. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. सो देखो दिस इज़ उखरुल टाउन. अभी उखरुल टाउन इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द उखरुल डिस्ट्रिक्ट हियर. और आजू बाजू में आप यहाँ ऊपर से पहाड़ दिखाई देगा ना. यू सी सो मेनी मतलब टिप ऑफ द हिल्स में आप देखे जाए तो यू फाइंड ऑल दिस विलेजेस अराउंड नो. तो इन लोग का सब यहीं पे दिस इज लाइक द मेजर टाउन अराउंड हियर. तो काफ़ी लोग यहीं पे सेटल होते हैं. काफ़ी लोग यहीं पे काम करते हैं. कुछ लोग इम्फाल में है कुछ लोग इम्फाल के बाहर है. तो ऐसा है. एंड उखरुल इज़ लाइक अ वेरी बिग डिस्ट्रिक्ट इन दी नॉर्दर्न हिल्स. दिस इज़ द हार्ट ऑफ तंगखुल community of the Naga group of the tribes. So this is a very nice place. Generally यहाँ पे बहुत ठंड रहता है हमेशा. लेकिन अभी क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर तो यहाँ पे it's being felt here. So it's unusually warm, especially this year. But generally in this place you'll be wearing pullover or at least a jacket something like that for throughout the year. लेकिन हम जो देख रहा है वो उखरुल का आधे पार्टी है. सेम वे वो सब साइड के जो स्लोप्स है उसमें भी यू हैव अनदर बिग थिंग. सो उखरुल इज अ वेरी बिग टाउन दैट्स वे. तो ओवरऑल मणिपुर में जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में लोग हैं वो मैतेई कम्युनिटी के हैं. यस. और उसके बाद फिर आपका 2 मेजर और कम्युनिटीज़ हैं नागा और कुकी. या. और उसके अंदर में सब ग्रुप्स हैं. यस. हैं. तो इन सब ग्रुप्स का फूड कल्चर और बाकी जो मैतेई कम्युनिटी का फूड कल्चर है सब मिल के मणिपुर का खाना बनाता है. यस. हैं. तो जो उखरुल हम लोग आए हैं यहाँ पे किस तरह का खाना है? कौन से कम्युनिटी का खाना है? सो तंगखुल इज अ वेरी मेजर तो तंगखुल इज अ कम्युनिटी. हाँ सब कम्युनिटी
within the Naga community. और they are a very मतलब काफ़ी बड़ा है, they are very large Tangkhul per se. They are also very nice group of hilly people. I personally find them, they are very good looking, both boys and girls, and they are nice too. You know, they are nice people generally. Very I'm not saying बाकी नहीं है, but you will find one of the things which you come to Ukhrul and find is people will be very warm in general, and people are generally a little more, I would find, polite and courteous. आपको यहाँ पे I don't think you'll have much problem in terms of communication as long as आपको English आता है तो. So यहाँ पे more or less सब लोग English बोलते हैं. यहाँ का जो खाना है in generally hills पे, I think again these are not 100% the fact, but most of the time, okay, the most important meat or food would be pork यहाँ पे, because we don't use any they don't use much spice or even herbs to that herbs. It's extremely important कि ये जो meat है and the ingredients जो हम लोग जो बना रहे जो भी है, it has to be of very very good quality, क्योंकि all the taste and everything has to come from there. Now pork में क्या होता है, you have the skin, then you have the fats, and then you have the actual muscular flesh part, you know. So all of them gives a very nice combination of taste and very wholesome, and obviously people are hardworking here because it's difficult life to live in the I mean it looks beautiful, but अगर यहाँ पे रुकना हो तो it's physically थोड़ा demanding है ना, हर चीज़ जगह जाने में ऊपर नीचे आता है, तो it's very suitable for this kind of climate, and plus it's cold. चुन चुन मैम क्या बना रही हैं? अभी चिकन बना रहे हैं? हाँ. चिकन में 2 डिश बन रहा है. हाँ, 2 डिश. क्या क्या है? ये तो लोकल स्टाइल में है. चिकन चिली. ये तो. Chicken chili local style, but no oil. No oil. No oil and With garlic, ginger. that is all. और इतना लाल मिर्च डला हुआ है. थोड़ा सा पानी. अच्छा, ये वही लोकल चिलीज है यहाँ का. लोकल चिली. The chili Dry is chili. there's a dry chili, local dry chili. So you grind it, so you get a very good color out of it. And on he's just saying the chicken is not local; it's a broiler chicken. That's all. और इधर क्या बन रहा है? सिर्फ plain water में. This is again boiled. चिकन एंड cucumber. Cucumber and spring onion with garlic. And you know why ऐसा boiling होता है ना? That's why the skin and all are very important, because it adds, उससे भी तेल निकलता है, जूस निकलता है, फैट से ही निकलता है ना. And they have come from the कई गवर्नमेंट में Shincha is I know. So there, how would you put that as? There will be southwest, south, east, huh? So this will be in the eastern side of the Tangkhul group. Like I said, there are multiple Tangkhul on different side, और हर तरफ का थोड़ा अलग-अलग स्टाइल रहता है. So this is the thing. But the commonality amongst all of them is oil is not going to be used. It's just going to be, you just pan dry it, और जो भी है जो तेल निकलेगा उससे ही खाना बनेगा. And you have to cook it for long time. यहाँ तो मेन्यू में आलू पराठा भी है, नूडल्स भी है, मोमो भी है. हाँ. चिकन मोमो. और चाय है, ग्रीन टी You है. try. You have multiple types of chai, by the way. Buckwheat, whiskey, peach, hibiscus, chamomile. हाँ तो चाय लेंगे, ग्रीन टी. चाय हाँ. After खाना तो चाय होना है. मतलब यहाँ पे if you come to all the in the hills in generally, खाने के बाद चाय is the way. A lot of places. And another चीज़ मैं बताना चाहता हूँ. How did I know this place? क्योंकि this is a very hole in the wall kind of place है ये. यहाँ पे ना सबसे अच्छा आलू पराठा मिलता है. This is like a very and most उन लोगों का सबसे selling item रहता है आलू पराठा. मैं देखा, मैं आते ही देखा जो बच्चा है सब खा रहे थे ना, वो बैठ के अपना आलू पराठा खा रहा है सॉस के साथ. साथ में सब्जी क्या दिए हुआ था आपने? वो क्या है? सूखा रोटी का सब्जी. अच्छा, दाल देता था. दाल भी. And then you have the spicy chutney भी है. But yes, the aloo paratha I think is a must try. You should definitely तो try. एक आलू पराठा भी खा लेंगे साथ में. Yes, we'll do that. हाँ, एक आलू पराठा खाएंगे, राइस खाएंगे, चिकन खाएंगे और चाय भी पियेंगे. हम लोग
उखरुल पहुंच चुके हैं और उखरुल में एक बहुत ही सुंदर कैफ़े में हम लोग आए हैं जिसका नाम क्या है? इस बिब्लियो कैफ़े। और यहाँ पे बहुत ही टेम्पटिंग खाना दीदी ने बना के हमें सर्व किया है, जिसमें 2 तरह का चिकन है। एक तो बॉइल्ड चिकन है विथ कुकुम्बर और एक है चिकन विथ चिली। चिकन विथ चिली, लोकल चिली। इन द टंकुल स्टाइल वन। और फिर राइस है, राइस है, पराठा, आलू पराठा, और ये है मसूर की दाल। या मसूर की दाल। चलिए पहले खाते हैं, उसके बाद कैफ़े के बारे में और जानेंगे आपसे। वेरी हंग्री। हाँ, ये पूरा एकदम लाल मिर्च में बना हुआ है। Here it is, I'll take the wings. ऑयल फ्री कुकिंग। You get a very subtle taste of the चिलीज। chilies भी है, but even actually chili tastes little different. The chili itself is not just for the color, but it also adds a little bit of flavor to it. जो चिली है इसमें मतलब at the end you get the hint of sweetness. Yeah. हाँ, really tasty. Full of flavors. Yeah. And the heat is very subtle. It's not too strong. Yeah, it's not bad. बहुत ही बढ़िया बैलेंस्ड है। बॉइल्ड चिकन। This proper protein. Soup, momo, Momos. chicken momo. Yeah. So, I mean, it's boiled, but you see, it's not bland. It is rich. It has those small elements. I mean, it's very pronounced, no? Because minimalistic type of food, I would say, no? इसमें हर चीज़ एक दो चीज़ जो डाले है उसका प्रॉपर टेस्ट हर चीज़ पे आ जाता है। फ्लेवर्स आता है वो आपका क्यूकम्बर से है, सॉल्ट से है, जो स्प्रिंग अनियन डाला है उसका है, वो सब इन्फ्यूज हो गया चिकन में। या हाँ? मतलब अगर आप इफ यू पुट जैसे इन नॉर्मल जैसे आप इंडियन वे ऑफ कुकिंग तो हम लोग काफ़ी मसाला यूज़ होते हैं, उसमें यू डू गेट एन ओवरऑल कॉम्प्लेक्स टेस्ट, बट मे बी समटाइम्स इट्स नॉट वेरी एपरेंट, नो? हर इंग्रेडिएंट का जो टेस्ट है वो उतना एपरेंट नहीं होता है। आई कॉल दिस क्लीन फ्लेवर्स। Yeah. आप कोई चीज़ बनाते हैं कम मसालों के साथ में, तो जो रियल फ्लेवर्स होते हैं वेजिटेबल्स के या मीट के, जो भी कुछ है वो आपको प्रॉपर मिलते हैं। Yeah. तो उसको कहते हैं क्लीन फ्लेवर्स। And these are not those fast food. I mean, we can't make it like a fast food. Like I said, no, कि the most important ingredient in all this cooking, Tangkhul, yeah, on this side of thing is patience, because you have to slow cook for a long time. जितना लंबा करे, juice निकले, things get fused. तो that is the basis. तो ये सब ऐसा तुरंत ऐसा में तवा में ऐसा डाल के टक टक करके वो नहीं हुआ है। हेल्दी फूड है। Yeah, definitely healthy food. लाइक पहले मोमो खाते ठंडा हो जाएगा ये। Yeah, yeah. विद दिस चटनी Yeah. थोड़ा सा। Try this. Sorry. Warm है। ये आलू पराठा है। Yeah. इस पर अपना ये कोरिएंडर एंड chives। वाह, It's soft, no? It is a very nice balance. बहुत ही उम्दा है। I mean, it's very smooth and very soft inside, no? मतलब और जो आलू का मसाला भरा है इसमें बिल्कुल इवनली सब Yeah. तरफ स्प्रेड आउट है Yeah. और बिल्कुल पतला है। Yeah. हाँ? And उसमें ना उतना मसाला भी नहीं है। It's like एक दो again the same इसका जो effect ना it all comes, no? You do not put so much masala in it. Now let's move on to rice and dal. This is comfort food, soul food for me. Yeah. हाँ? दाल चावल और इसमें काला जीरा डाला हुआ है और साथ में मिंट सिट्रसी टाइप कुछ फ्लेवर भी है। डाला होगा। I'm not sure. But I'm going to eat this. जो वही हमें ये चिकन ही खाए थे, like with this particular इसका जो broth है ब्रोथ के साथ। and rice is like Okay. I will also do that. very nice. It's a little sweet. It's everything.
some cucumber, some broth. थोड़ा सा मिर्च and What I like it is just simple, but it's not lacking. see, It's simple but rich in a way, you know. I'll tell you one thing. Simple food is hard to cook and it's more delicious. That's what I'm saying. क्योंकि आप मसाला डाल के कुछ भी फ्लेवर्स आप इन्हांस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. मतलब हाउ टू बैलेंस इट विद अदर थिंग्स विद नो ऑयल, नॉट मच ऑफ मसाला. दैट्स एन आर्ट. ये जो पूरा खाना है सिंपल है, हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, डिलीशियस है और बहुत ही उम्दा है. We just had a good, amazing food. जिसके आप अच्छा नींद में आ रहे हैं. हाँ. But it's all thanks to Mr. Tuidang. He is the owner of this joint. Its name is what's the name? It's Bibio Bistro. The bistro. So yeah, so he's the one, and he made that the chicken and everything, at least specifically for us, and he will tell you what made it little more. या फर्स्ट लाइक विल टॉक अबाउट द यहाँ का जो कुकिंग स्टाइल है उसके बारे में कि क्या स्पेशल बनाता है यहाँ के खाने को और यहाँ पे लोकल्स क्या खाते हैं. It's very hard to say what kind of foods because this is a district. It's a place where every nook and corner of Tangkhul community comes and settle here. So like everyone has its. For example, we have this North Tangkhul, South Tangkhul, East Tangkhul, West Tangkhul. So every village has its own distinct, different cuisine. So most people from the west side and then north, they are mainly into meat. Whereas from the south and east, we prefer like meat with veg. So it's a different kind of cuisine. So like everyone has its own specific like day-to-day the menu which they are into like. So some people they prefer mainly meat, chicken, pork, but pork is the main ingredient for the Tangkhul Naga life. But there are people who doesn't take pork as well or even beef, but for them like fish and chicken. But then pork is the main meat, main protein. Main protein. So, But the common denominator, like he was saying, is that it's just going to be there is no masala, right? It's normally going to be very minimalistic. It's just going to be boiled, and it's going to be spiced up at max with the type of chili and the type of vegetables. That's what you just have to boil, and that's what you're talking about. The thing is, the way we prepare this food, this meat especially, is that we don't normally use all those masalas. Normally we use it's from like passing down from ancestors. It's a kind of a hygienic food, right? People from all days they teach us how to use only the jungle where we get all those herbs. So like mainly now we are using this spring onions, then what do you call this? Garlic, ginger. Then we have this dried chilies. Every villages they do have they harvest dried chilies. But some areas where it's hotter, and the dried chilies are more hotter. Where it's a cooler climate, the spiciness is not there. So like, but the color flavor, people go for the color as well. So the ingredient which I for the chicken which I made today, I just collected some of this dry red chili from every
woman vendor. So I selected some, which wouldn't be hot, but it give a distinct, the color, the redness, and also the smokiness flavor. So that we have to first of all we roast, then we desit, then we grind it. Grind in the sense that we don't grind in a machine. There's Like a a motor. You have to right? pound. Motor pestle. Yeah, motor pestle. And that way it gives out, the good, that aromatic flavor. Yeah. Machine, it doesn't give up that aromatic flavor. So when you taste, you'll have that different kind of that smokiness, then that sweetness, right? That people might think that we are adding some kind of like a sweetener or kind of sugar, but it's nothing. There is no sugar flavor, nothing. It's the sweetness that is coming from the chili as well. तो यहाँ पे आके अपना बुक्स भी पढ़िए, म्यूजिक भी एंजॉय करिए, चट-चट करिए, अच्छा खाना खाइए. Relax. We're keeping this book for sale as well as for reading also. Because nowadays, the younger generation, so to say, you don't find much people reading a hard copy. Right? Everyone is hooked to a mobile. Yeah, hooked to It's mobile. everywhere. If some people want to read novel, they go online. And there's the culture of reading a hard copy. So it's getting lost. So we're trying to introduce to the younger generation to have the good habit of reading books. Because reading books, it connects throughout, the knowledge is there. Yeah, true, You gain knowledge, wisdom. So, as the elders say, read books. Read books. It helps you. आप तो मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Yeah, very nice. चलिए. Okay, चलो bye-bye. Thank you everyone. Chong. Thank you. Everyone. Nang bare, nang jare, Numai jare. nai jare, nai jare. Okay, चलो bye. So we are in Awa market. Okay, so this is one of the main, somewhat like an Ima market for Ukhrul. Yongchak, This is Yongchang. tree beans. ये snacks section. Chow mein, bora, ये cake. cakes. Nice. Lagpa, चलो जाए. tam ay di ngaw de.